Actually, earlier we have seen all the channels which is used to carrying the RRC message, correct? But in Rach procedure will be initiated by the MAC layer, that is not from the RRC layer, correct na? It is the MAC layer job who will initiate the Rach procedure. So between MAC and physical there is transport channel. So that is the transport channel का नाम है Rach. There is transport channel, and physical channel means from physical layer your UE physical layer to E node be physical layer and E node be MAC layer. Same, it's a physical channel, physical Rach. Same, now we go here, P Rach, the Rach. अपलिंक में होगा बहुत सारे केवल इन अपलिंक ओनली अपलिंक फ्रेम में ठीक है सर ठीक So yesterday I was discussing that how the Rach procedure will be triggered, how the Rach procedure will be triggered. So now we'll see some P-Rach P-Rach parameters that will be used to initiate, like suppose your mobile is initiating the Rach procedure. So for initiating the Rach procedure, few P-Rach parameter is required, which will help the UE to understand where exactly in the radio frame Rach procedure will be initiated, how many codes are required to initiate this procedure in a sub-carrier in frequency domain, what would be the resource for P-Rach. So this parameter, P-Rach parameter will give the answer of all these things. So we'll discuss following P-Rach parameters. First one is the Tremble configuration index. Second parameter we'll discuss zero correlation zone. Third parameter is root sequence index. Fourth one is the high speed flag. Fifth one frequency offset. These 5 parameters we have to discuss. So actually in interview, this is one very popular question in the Rach. They will ask, how we will know the resource, you can say Rach resource, where Rach resource in radio frame where we have to initiate संजय, मेरा भी डाउट है,
यस सर। 2020 के बाद हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे सर। वही मतलब देख रहा हूँ रोज दिन कुछ न कुछ हो रहा है, कभी कोरोना, कभी इंडिया चाइना भिड़ जा रहा है, कभी इंडिया पाकिस्तान भिड़ जा रहा है, कभी इंडिया नेपाल चल जा रहा है, समझ में आ रहा है। 2020 के बाद हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन चाइना नहीं रहेगा कंफर्म था। दुश्मन दोनों रहेंगे। विनीता तो बोल रहे सर हमको ताइवान में जॉब चाहिए, तो बोले हमको ताइवान में जाना है, बिल्कुल हार्डवेयर पे काम करना, चिप से। So now this means what I am telling this, I am explaining this question. Suppose we have the radio frame in every 10 millisecond. Raj process, you understand, it is your mobile who will initiate the Raj. So in that radio frame, suppose this is one radio frame of the 10 millisecond. You know, in that frame we have 10 subframe. Subframe 0 to subframe 9, and then multiple subcarrier as we know. So in this frame, where exactly is the resource for Raj? Because that is a random procedure, so we cannot say that this particular resource is fixed in every frame for the Raj. So if suppose any UE has to initiate the Raj procedure, how UE will know where exactly is the resource for that UE? Because if UE don't know where is the Raj resource for your mobile in this frame, then how your UE will initiate the Raj procedure? Your mobile has to know. So for that, this parameter will be helpful. So these parameters, there will be some few of this parameter that will help the UE to understand, to know that where is the resource for this particular mobile in a radio frame. You can initiate the Raj procedure. So there are total 64 here. First is the 64 Premble configuration index. So there are total 64 Premble allocated for each cell. There are 64 Premble configuration index is allocated to each cell. So in every cell there will be 64 Premble. These 64 Premble configuration index will be created by using the several root sequence. We have total 64 Premble configuration index. What is the use of Premble configuration index? How this Premble configuration index will be created? So these 64 Premble will be created by using several root sequence. So by using several root sequence, this 64 Premble will be created. So per cell we know the 64 Premble, one or several root sequence, by using one or several root sequence. So this 64 Premble will be generated by using one or maybe more than one root sequence to create the 64 Premble.
So this random access procedure will start by the UE by selecting one or more preamble, means there will be 64 preambles, so out of 64 preamble UE will select one from all these available preamble. So now we have the 64 preamble, suppose in a cell, what I am telling, total 64 preamble in a cell is available. ये preamble है क्या? That is like signal sequence. So it's a MAC layer, your UE MAC layer. When you initiate the RACH to the E node MAC, so UE will send your RACH preamble for the RACH sequence. So there are total 64 unique RACH preamble is designed in a cell, only 64. Out of 64, UE will randomly select anyone. Select anyone and transmit batch preamble. Out of this, UE किसी एक को select करेगा, this is called the random. Randomly select anyone and transmit the batch preamble to email. So now total 64, out of 64 UE will select anyone and transmit the RACH preamble, but to transmit this RACH preamble, let's have the RACH procedure. We need the resource, UE need the resource. This RACH preamble will transmit in the radio frame. So in the radio frame where the UE have the resource to transmit this RACH preamble, in the radio frame, where is the resource? So to then provide the information about that resource, this first parameter is helpful. Here preamble configuration index will inform the UE about their resource in time domain. In time domain, where is the resource? Where is the resource for your mobile in time domain to transmit the RACH informations? That will be decoded by decoding this parameter preamble configuration index. So preamble configuration index, the first parameter. What is the use of preamble configuration index? Preamble configuration index will define the system frame number it's called the SFN, means which frame number will be represented in the terms of system frame number and sub frame number within the system frame within the system frame where we will initiate the batch.
So this is the parameter which will exactly tell which system frame number and which subframe number. Which system frame number means, because one frame having the 10 subframe. So by knowing only frame number is not enough till where exactly Rach will started. In that frame we will tell the subframe number where Rach has to start. So in frame, subframe number, and then that is the use of your Premble configuration index that will tell the about the resource of Rach procedure. Sumant, Gangaraju, clear? Sumant, it's okay? Vinita, is it okay? किसी को डाउट है शशांक? ओके शॉर्ट में यही है कि एक फ्रेम में 10 सब फ्रेम होगा, 10 सब फ्रेम में से कहीं पे एक जगह को प्रीएम्बल होगा, है ना? ऐसा मैं नहीं बोला, पूरे कॉन्सेप्ट में उल्टा कर दिया देने से। हाँ सर। ओके, हाँ मैं बताता हूँ, प्लीज म्यूट करना। एनीवन एल्स, एनीवन हैविंग डाउट? संजय, सब फ्रेम नंबर पे कहाँ प्लेस होगा सर? मतलब सब फ्रेम नंबर, अभी नो फ्रेम नंबर, सब फ्रेम नंबर पे पोजीशन क्या होगी सर? वो बताऊंगा, पहले अभी तक जो बोला वहां तक डाउट नहीं है ना? नहीं कोई डाउट नहीं सर। आगे बताता हूँ सर। एंड दानिश सर, तुम तो पूरा यू अंडरस्टैंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वे। व्हाट आई एम टेलिंग, दिस योर UI site preamble, we have the 64 unique preamble sequence. Please understand, most of the people get confused here. This preamble sequence, please don't relate with this parameter, Preamble configuration index. Both are different thing. Preamble configuration index E node we will transmit to the UE, and Preamble sequence UE will transmit. So actually in a cell there are 4 unique, you understand, 64 signal sequence. You understand like this? Preamble sequence just like a signal sequence. So there are 64 unique signal sequence. Out of these 64, UE will select any one preamble sequence to initiate the Rach. But where exactly UE will, because preamble sequence selected, now where exactly UE will initiate the Rach in that radio frame or subframe, that information will be provided by the Preamble configuration index. So both are different things. Please don't understand both are same thing. Preamble configuration index, E node we will give to the mobile. Preamble sequence, it's having in the UE side in a cell is already available. Mobile will randomly select anyone. Select anyone, suppose I am telling this 64 preamble sequence is available. Out of these 64, your mobile randomly प्लीज म्यूट। निरंजन क्या कर रहे हो तुम? गणेश सर कुछ बोलना चाह रहे हो? क्लियर हो गया सर। हाँ क्लियर हो गया। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। क्लियर से अभी कैसे क्लियर हो गया? यहाँ पे इंडिया के 21 सोल्जर्स मर गए, तुम्हारा क्लियर हो गया। मोबाइल randomly select anyone out of these 64 preamble sequence. So because at a time it's not only one mobile who can initiate the Rach, there are multiple mobile.
Any mobile who does not have resource, they can initiate the write, so they will select any one out of these 64 preamble sequence, any one. So suppose your mobile selected. Now after selecting the write preamble, your mobile have to transmit this write preamble. So mobile will transmit this write preamble to the E node B MAC layer, but directly to जाएगा नहीं ना. Again from your UE MAC to the physical layer, so it will go in the air interface. Means in the radio frame, this write preamble you selected, fine. Now transmit on the air interface, means within the frame. So within the frame, where exactly this write preamble will transmit, how UE will know? Randomly UE cannot send anywhere. Randomly you select the preamble sequence, but where exactly UE have to transmit this write preamble in this any radio frame, means you can say available PRACH resource, available write resource. How UE will know where exactly I have the available PRACH resource in this radio frame? So जब UE को resource पता होगा तभी तो UE जो है ये write preamble को भेजेगा. So that resource information, how UE will know? For that, before starting this write procedure, E node B to UE, already you know your downlink synchronization procedure has completed. Before write, power on procedure. Power on procedure means I said downlink synchronization procedure. So during power on procedure, it is the E node B job in SIB2. E node B will send this in parameter to the UE. E node will send this parameter to the UE, and this parameter actually helping the UE to understand where exactly in the frame and subframe write preamble will be transmitted. So before write procedure, UE know that parameter. One of that parameter is the preamble configuration index. And again I'm telling you, preamble sequence and preamble configuration index is different thing. So preamble configuration index, suppose E node will send the parameter preamble configuration index. This preamble configuration index will actually tell where exact, it will tell about the resource. Which resource? About the PRACH resource. This index will tell about the PRACH resource in time domain. So in time domain, where is the resource? This E node we will inform the UE. Once UE know about the resource, then your UE will select any of the 64 preamble. In that particular resource, you will send the write preamble. Dhaneshwar, now is it clear? Clear हो गया, clear हो गया. So लोग confusion में आते हैं. Preamble sequence and preamble index both are different. यहाँ पे confusion हो गया तो बहुत wrong, पूरा का पूरा write ही wrong हो जाएगा. Because preamble sequence UE select करता है, index E node भी बताता है, दोनों different चीजें हैं. अब मैं आता हूं संजय क्वेश्चन पे कि मोर पर्टिकुलरली आई एम गिविंग द एग्जांपल कि हाउ योर सब फ्रेम नाउ दिस थिंग टेल. सो preamble configuration index, luckily this is also 64 only. So there are only 64 preamble configuration index. Again I am repeating, there is no relation with this configuration index and this preamble sequence. Only one relation, that this UE have to transmit the preamble sequence and index will tell about that resource. So E node will send the preamble configuration index. You understand? Index, tell the numbering, okay, how many preamble configuration index. So that index will start from the 0, 1 till 63. So there are total 64 index, 64 preamble configuration index. There are 64 preamble configuration index.
and each frameable configuration index, because out of 64, E node will give any one to your mobile. So out of these 64, each frameable configuration index will define the system frame number, that is fixed, and the subframe number. Each frameable configuration index will define different system frame number, different subframe number, and that will tell where is the resource for your mobile to transmit the RAT. And this is a fixed because this is given in the specifications. So you can see this table here. This is table you will get in the physical layer in the specifications 36.211. So you see this table here. We have total 64 frameable configuration index, 0 to 63, total 64. So if you see these tables in every corresponding to every index, we have given system frame number. Even means they are telling, if suppose E node B has given you frameable index say 0, suppose Dhaneshwar for your mobile network given index 0. So if index 0 means this table is already, this is like a program, by using the array concept, this table will be implemented in your physical layer. This is fixed. They will define the resource, this is fixed. So if your mobile receive when E node B transmit the frameable configuration index for your mobile is 0, then your mobile understand, I have to transmit my RAT only in the even system frame number is 2, 4, 6, 8 like this, not every frame. मैं सब frame नहीं बोल रहा हूँ, frame number, system frame number means frame number. So you will transmit the RAT only in the even frame, but in that even frame, every frame 10 subframes. So which subframe? They given here. You will transmit in the subframe number 1. Means if any UE whose frameable configuration index will be 0, and again I already said how UE will know my frameable configuration value is what. So that already before RAT starting, E node will inform you in SIV2. SIV you will read already during the power on procedure. Already your downlink synchronization has completed, so you already know all the system information block. So with the SIV your mobile is knowing out of this 64 any frameable index, and based on that they given the resource. Suppose for any mobile, this any users, his frameable configuration is suppose 34, means he can transmit the RAT in any even frame number, and but subframe number is 7. So suppose I'm taking example, for example say 34. Suppose for example telling this is the UE, say this is the Mohit UE, it's a power on. He has to initiate the RAT. So this mobile select any frameable out of 64. So RAT frameable selected. Now it has to transmit the RAT frameable. But where? So for that this UE will see their frameable configuration index parameter. Say I'm example doing this frameable configuration index PID. I'm going to say it's a 34. For example, so in 34 we understand even and subframe number 7, means this Mohit mobile will transmit any even frame number. Even means suppose your frame, first frame, system frame number 0, 1, 2, it will keep going on. So even frame number means 2, 4, 6. I'm assuming that okay in second frame. Why I'm telling, now suppose Mohit mobile have to transmit the RAT. For example, till then suppose system frame 1, 2, 0, 1, 2, 3 has already passed. For example, suppose this 0, 1, 2, 3 already passed. Till then Mohit mobile did not require to send the RAT. RAT is not required. Now Mohit mobile have to transmit the RRC connection request message
So it does not have resource. Now Mohit Mobile has to initiate the RACH. So initiate RACH. So selected the preamble, and then first available RACH resource, whatever the available RACH resource, Mohit Mobile will transmit the RACH preamble. So what is the available PRACH resource in this case? If his PID is 34, even frame number. So third may, suppose just now mobile got easy to send the RACH. So third, suppose this point, now Mohit Mobile understood he has to send the RACH. So then third frame came. In third frame Mohit will send the RACH? No, because in this case if PID is 34 only in the even. So first available resource for Mohit Mobile is what? That's a fourth system frame. This fourth subframe. This is first available. In that fourth, which subframe? Subframe 7. Suppose this is a subframe 7. So here means in this part, this mobile will send the RACH preamble. संजय, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं सर, अभी नहीं हुआ सर क्लियर। सब जो कंप्लीट सम फ्रेम है पूरे में फंक्शन जाएगी सर? पूरे में नहीं जाएगी। टाइम डोमेन में पूरे में जाएगी। अच्छा सर। और अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात मत पूछना कि कौन सा सब कैरियर, क्योंकि उसके लिए हाँ टाइम, बिकॉज टाइम preamble configuration index is telling the resource about the RACH only in time domain, not in frequency domain. For frequency domain, once we'll see this parameter, then that's what I'm telling, then you will get the answer of this question completely. To tell the answer of this question completely, we have to understand all this parameter. सिर्फ अभी एक पैरामीटर से क्या है ना, we now understand only, suppose this is your, say ये तुम्हारा था even frame, and suppose say this is a subframe number 7. So now in the Mohit Mobile they understand that they will send the RACH in this subframe, but in this subframe which subcarrier, till now we don't know about the subcarrier. Only we know in this subframe 7 RACH start होगा, but which is subcarrier, because suppose in 20 megahertz there will be 100 subcarrier, 1200 subcarrier. So in subframe 7 all 1200 subcarrier will be used? No, because RACH will require, RACH procedure will be transmitted, RACH preamble transmission needs one subframe in time domain, टाइम डोमेन काम हो गया, एंड 6 रिसोर्स ब्लॉक इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. So till now we get the answer till here. We get the which subframe you will transmit the RACH, but which is 6th resource block. So this is fixed. Every time you need the 6th resource block, but which 6th resource block? Suppose for example, this frame is transmitting in 20 megahertz band. In 20 megahertz band, Dhaneshwar, how many resource block? Dhaneshwar ही बोलेगा सर. Dhaneshwar. अब देखो अनम्यूट करने में उसको टाइम लगेगा, पहले पेज टर्न करेगा, देख लेगा, फिर बोलेगा. नहीं सर, पेज टर्न नहीं कर रहा हूँ. 20 मेगाहर्ट्ज में इसमें सर कितना से मल्टीप्लाई करना रहता है? आई थिंक 12. एक मिनट. पेज टर्न हो रहा है, तुम्हारा आवाज आ रही है, तुम ट्रेन ऐसे टर्न मत करो. याद नहीं है सर. हाँ, तो पेज टर्न कर दो तो बोला करो, झूठ नहीं बोलने के. क्या लाइफ में झूठ बोलने से बहुत बड़ी पाप लिखती है, फिर कोरोना चलाएगा तुम्हारे घर में. सर 20 मेगाहर्ट्ज में नंबर 100 होगा नंबर एपिसोड. विनीता को पूछना पड़ता है, बेचारे क्या है, नाइट शिफ्ट अटैच हो जाती है. विनीता वो सो गई. 20 मेगाहर्ट्ज में कितने रिसोर्स ब्लॉक होंगे?
नहीं पता, याद नहीं। थोड़ा सा रिवाइज तो करोगे, थोड़ा सा। इसमें क्या ना, जो नंबर ऑफ बैंडविड्थ रहेगा ना, उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, नंबर ऑफ रिसोर्स लोग मिल जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 5, 100 हो गया। सो 20 मेगाहर्ट्ज में मल्टीप्लाई करते हैं रिसोर्स ब्लॉक के लिए। अभी आप चुप रहो, अब लास्ट, अब जाके वो वीडियो देखो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 20 मेगाहर्ट्ज में 100 रिसोर्स ब्लॉक है। व्हाट आई एम टेलिंग, always your mobile will take only 6 resource block in frequency domain for batch. So suppose just now I took in the Mohit case only, what I said, in suppose subframe 7, say I am telling this is say subframe 7. In Preamble configuration index will tell only in time domain. Preamble configuration index telling about the subframe. Subframe is the concept in time domain. In subframe 7, which is 6 resource blocks, suppose in 20 megahertz we have 100 resource blocks, so 0 to 99, but अपने को चाहिए सिर्फ 6, only 6. So which is 6 resource block will be used? That information will not given by the Preamble configuration index. That information will be given by this parameter frequency offset. Frequency offset will tell the beginning of those 6 resource block. So suppose now I'm completing this Mohit mobile example. Suppose in Mohit, again I say this parameter will transmit in SIB2 only. So frequency offset E node we already will tell during downlink synchronization. Suppose in Mohit mobile only, now I'm telling, say this is, for example, your bandwidth is, for example I'm telling say 5 megahertz. And say I am telling frequency offset, for example 7. Yes, now knowing these two parameters, preamble ID and frequency offset, you will get the, your mobile will know the clear picture about the time domain and frequency domain, where exactly your write will start is. So suppose I am completing with this example, now I am writing here. So I am telling this is your mobile, which parameter mobile already knowing downlink in SIB2 mobile know about the parameter Preamble configuration index and the frequency offset. What I said is, suppose I assume this value is 34, this value is 7. Now what does it mean technically to understand? So already said 34 means, you know, any even frame number, and in that even frame number only 7 subframe. Subframe number 7 will be used. Frequency offset 7, what does it mean? Your UE in frequency domain require the 6 resource block, total 6 चाहिए, but that 6 numbering will start from which number, which 6? Suppose I say, for example, you say it's this example I'm taking for the 5 megahertz bandwidth. So 5 megahertz bandwidth means, Vinita, just now I said how many resource block, Vinita? 55, 25, 5 multiply 5. Yes. So total 25 रिसोर्स ब्लॉक होंगे विनीता। फर्दर म्यूट रहो, आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा तक फिर से, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टोटल 25 रिसोर्स ब्लॉक है विनीता, 0 to 24। धनेश्वर तुम भी ध्यान समझना। एंड ईच दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नाउ इन टाइम डोमेन वी नो हाउ मेनी सब फ्रेम, विनीता 1 फ्रेम में कितने सब फ्रेम होंगे? 10 एनएलटी होता ना, 10 सब फ्रेम। सो सब फ्रेम 0, सब फ्रेम 1, लाइक दिस वी हैव टोटल 10 सब फ्रेम।
I'm assuming suppose this is the, for example, say this is the 7th subframe, for example. So I'm assuming suppose this is the subframe number 7 because we need the 7 this subframe number 7 will be used for the right. So Pemble ID 34 means 7 subframe यूज होगा. चलो ठीक है, ये वाला subframe हमें यूज करना है. But there will be the 25 resource block na, in 5 megahertz bandwidth 25 resource block. For Rach, what I said, mobile need the 6 resource block. So now which 6 out of this 25 में कौन सा 6 यूज करोगे? So that will be helpful by the frequency offset. Frequency offset telling value 7. 7 means 7th से वो numbering start करो from the 7th resource block. Means out of 0 to 24 means 25 resource block. Suppose say और frequency offset की वैल्यू कुछ हो सकती है. Suppose ये मत समझना कि this subframe 7 means frequency offset 7. No, better we change this. Suppose this value I'm taking 8. तो तुम लोग बोलोगे 7 7 coincidence होना चाहिए. No, this is no relation. So 8 means now suppose this is your 8th resource block. So yes, from 8th your numbering will start. We need the 6th resource block, na? So suppose this is 8th resource block, not subcarrier resource block. Suppose this is 8th, 9, अपने 6 चाहिए ना, 10. So 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 8 to 13 now is clear picture. Means Mohit mobile will initiate the Rach at this location. यहाँ ये रिसोर्स है मोहित के मोबाइल को रैच सेंड करने के. सबफ्रेम 7 में ये वाला जो सब के रिसोर्स ब्लॉक है, नो, हियर मोहित विल नॉट सेंड द रैच. Rach will transmit here. So this two parameter means once mobile will know preamble configuration index and frequency offset, then your mobile will know exactly where exactly in a radio frame your Rach preamble will be transmitted. So अब ये mobile यहाँ पे इस लोकेशन पे Rach preamble transmit कर देगा. So at this location, Mohit will transmit the Rach preamble. सर एक डाउट था सर. अभी रुक जा 2 मिनट बस ये लिखना, तो फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पहले लाइन, ऐसे लाइन सेंटेंस में भूल जाऊंगा फिर. At this location, Mohit will transmit the Rach preamble by selecting any one out of 64. 64 में से कोई भी एक Rach preamble ट्रांसमिट सेलेक्ट करेगा और इस लोकेशन पे Rach preamble को ट्रांसमिट करेगा. यस, किसका डाउट है? कुछ डाउट? सर मेरा सर अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन में मान लीजिए सर 64 यूई से ज्यादा यूई रहेगा तो उस केस में सर जो 64 प्रिम्बल है तो कैसे यूज होगा? जैसे ईच यूई के लिए तो आप बोल रहे हैं एक मैंने प्रिम्बल सिलेक्ट करेगा. अगर 64 यूई से ज्यादा रहेगा कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे तो जो पहले जो प्रिम्बल यूज हो चुका है वो दूसरा यूई के लिए अवेलेबल रहेगा? यूज होगा. जो तुम्हारा 64 यूनिक प्रिम्बल है, अंडरस्टूड ना? यस सर. 64 यूनिक है तो दूसरा यूई क्या करेगा? वही प्रिम्बल यूज करेगा जो पहला यूई यूज कर रहा है. तो ऐसे में तो सर लोड बढ़ जाएगा ना, डिले होगा. ये तुम्हें किसने कहा कि लोड बढ़ जाएगा, डिले होगा? कैसे लोड बढ़ेगा सर? नहीं सर, हम सोचे जो सेम टाइप का यूज करेगा तो ज्यादा यूजर हो जाएगा ना सर. ज्यादा यूजर हो जाएगा. यूजर तो ज्यादा ऑलरेडी है ना, तुम तो बोले ज्यादा यूजर है ना. हाँ, तो प्रिम्बल यूज करने से, सेम प्रिम्बल यूज करने से लोड कैसे बढ़ेगा?
पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है निरंजन, इस पॉइंट को हम लोग बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, वो आने दो। इन लेटर विल सी, इसलिए बोला कभी अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा देर के लिए रख लो, भावनाओं को अंदर में रख लो, लेकिन ऐसे ही मतलब मन से मत बोल दो कि लोड बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। रैच प्रोसीजर विल सी, अभी तो मैं रैच का बिगिनिंग देखा। रैच प्रोसीजर विल सी देयर विल बी टू टाइप्स, कंटेंशन बेस्ड रैच एंड नॉन कंटेंशन बेस्ड रैच। ओके निरंजन, तो कंटेंशन इज कॉल्ड मीन्स कोलिजन, और कोलिजन तभी होगा जब दो यूई सेम टाइप का प्रेम्बल यूज करेगा। अंडरस्टैंड ना? Yes. फायदा पॉइंट है, लेकिन दो यूई सेम प्रेम्बल यूज कर सकता है और करता ही है। उसी टाइप के रैच को ही बोलते हैं कंटेंशन। कोलिजन, कोलिजन क्या हुआ है, दो यूई ने सेम प्रेम्बल को यूज करके भेजा है कि इफ सपोज देयर विल बी मोर देन 64 यूई in a cell who has to initiate the rats, obviously they can initiate by, if more than 64 then definitely 2 UE will use same preamble use होगा तो collision। Yes, sir. ओके, तो ये सब चीज़ हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट फॉर टाइम हमारे क्वेश्चन का आंसर इतना मैं दूंगा कि हाँ यूज कर सकते हैं। Okay, sir. Okay. ठीक है, और डिले कैसे होगा इसमें तुमसे सुना था, डिले होगा, लेकिन डिले क्यों होता है, ये कोलिजन को रिजोल्व करना होता है, उसी को बोलते हैं कंटेंशन रिजोल्यूशंस। सो इस सब की चीजें बहुत टेक्निकल चीज है, वो Okay, सारी sir. चीजें जाएंगे। अभी अपने को सिर्फ पीएच पैरामीटर मिलके पीएच को इनिशिएट किए हैं। अब रैच कितने टाइप का होगा, रैच फेल होने के बाद क्या क्या होंगे, अभी रैच 2-3 का क्लास नहीं है, अभी तो सब 4-5 क्लास अभी और चलेंगे। Okay, sir. रैच तुम्हें वंस यू नो द रैच वेरी गुड, तो तुम्हारा सोच लो कि 30% इंटरव्यू काम होगा। रैच गुड होने के लिए सिर्फ तुम क्लास पे ही डिपेंड कर सकते हो। आप गूगल भी पूरा ट्राई कर लो, सब ट्राई कर लो, लेकिन इन्फॉर्मेशन से तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए क्लास को सुनना, मैं सारा चीज कवर कर दूँ, तो अभी आएगा ये कंटेंशन नॉन कंटेंशन। क्या ठीक है सर। सर सर हाँ संजय प्लीज। सर ये जो रिसोर्स ब्लॉक लोकेशन है 6 में, ये सर साइक्लिक होता है। सपोज रोज 5 मेगाहर्ट्ज में मुझे स्टार्ट मिलता है 23 से, ठीक है सर। इट विल बी साइकिल क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है साइक्लिक? सर रिसोर्स ब्लॉक जो मुझे 6 रिसोर्स ब्लॉक को ट्रांसमिट करना है, ठीक है सर, किसी पर्टिकुलर सब फ्रेम पे, ठीक है सर। तो सपोज एलोकेशन यूवी को इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको ना जो ऑफसेट है वो 23 आता है, ठीक है सर। 23 24 के बाद 0 जैसे साइकिल होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये मत समझना कि 5 मेगाहर्ट्ज है तो फिर ई नोड भी काम क्या कर रहा है, ई नोड भी 5 मेगाहर्ट्ज पे बैंडविड्थ पे काम कर रहा है। हाँ, तो वो 23 भेज ही नहीं सकता है। अच्छा ठीक है सर, ये डाउट था मेरा सर। नहीं, साइक्लिक नहीं होगा ना सर। इसलिए पर क्वालकॉम में पूछा था इंटरव्यू में कि व्हाट इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द, ये क्वालकॉम में पूछा हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफसेट इन एलटी। एलटी में फ्रीक्वेंसी ऑफसेट का रेंज क्या होगा? चलो रिनंजन तुम क्वेश्चन पूछे तो तुम आंसर दो। अच्छा संजय ने आज क्वेश्चन पूछा था ना, तो आंसर दो। दैट वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफसेट इन एलटी? ओके, बट इट्स डिपेंड ऑन सर बैंडविड्थ, किस बैंडविड्थ पे ऑपरेट कर रहा है। इसलिए एलटी में बोल दिया ना, सीधे बोल दिया एलटी में। तो तुम बताओ ना कि रेंज, इसी तो दैट्स व्हाई दिस इन रेंज ना, मिनिमम से मैक्सिमम कितने होंगे? 5 पे 25 तो 6। विनीता चलो ये बोलने का ट्राई करो। विनीता बेचारी को जब से सुशांत राजपूत सुसाइड कर लिया शौक हो गया। अभी उसको मूवी देखना था सुशांत राजपूत का। पता है सेम क्या हुआ, मेरी वाइफ को 4 दिन पहले ही बोले थे, ऐसा बारिश का मौसम था ना, तो वो मतलब ये उसको सुसाइड करने के 4 दिन पहले करीब कहीं पे केदारनाथ मूवी नहीं है, मुझे दिखाओ डाउनलोड करके, कुछ भी करके अमेजन प्राइम में सर्च कर रहा था, नेटफ्लिक्स में सर्च कर रहा था, कहीं पे मुझे दिखाओ। और ऐसा बात करते करते 2 दिन में निकल गया। बोले तो मुझे देखना भी नहीं, मुझे डर लगेगा देखने में। हम कह लो तो तुमको भी विनीता केदारनाथ मूवी नहीं देखना था? हाँ सर, मैंने देख ली थी पहले।
हाँ, मैंने पहले ही देख लिया था। कैसा था मूवी? अच्छी थी। और केदारनाथ में काफी सीन दिखाया है। क्या सर? केदारनाथ के काफी सारे लोकेशन दिखाए हैं। हाँ जी, अंदर में मंदिर भी ले गया है। सब आप भी देख लो। मैं पूछ रहा हूँ अंदर नहीं, मैं देखा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। अंदर मंदिर तक दिखाया, दर्शन किया, अंदर टेम्पल तक ले गया। हाँ। चलो अच्छा, तो तुम्हारा घर सर बैठे जीरो बैठे 5 मेगाहर्ट्ज में 0 to 20। अरे 5 मेगाहर्ट्ज में ये नहीं बोल रहा, मेरा क्वेश्चन सर सुनो। वो सर क्वेश्चन वाक्य में 4G ऐसे के पूछा, लिए व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफसेट इन एलटी, वो नहीं बोला 5 मेगाहर्ट्ज 10 मेगाहर्ट्ज। सर एलटी में तो 10 मेगाहर्ट्ज और 15 मेगाहर्ट्ज दोनों यूज होता है सर। तो सर 10 मेगाहर्ट्ज यूज होगा तो 50 हो जाएगा, फिर 15 किसके मेगाहर्ट्ज यूज होगा। किसके प्रवचन है? दानेश्वर के। दानेश्वर जी तुम्हारा तो सर। पता है, मैं एक दिन आऊंगा गला दबा के मार दूंगा। क्यों सर सर? 6 to 100 10-15 सिर्फ यूज होता है, एलटी में तो क्या है 1.4 1.4 से लेकर 20 20। मेगाहर्ट्ज तक का बैंडविड्थ है। नॉर्मली सर 10 और 15 प्लीज यूज हो प्लीज रहा है। प्लीज प्लीज दानेश्वर, आरएफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको साइड में रख दे दोस्त। जब प्रोटोकॉल तुम्हारा मोबाइल जब डेवलप करोगे एप्पल का, तो क्या तुम्हारा इंडिया के नेटवर्क में 10 मेगाहर्ट्ज से काम करेगा? वो स्टैंडर्ड बोल रहा है एलटी, दैट्स 1.4 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक का बैंडविड्थ रहेगा। तो व्हेन यू विल डेवलप द मोबाइल, इट शुड बी कंपेटेबल विद ऑल बैंडविड्थ ना। यस सर, यस। अदरवाइज क्या है, 1.4 मेगाहर्ट्ज जहां पे रहेगा वहां पे एप्पल का मोबाइल काम ही नहीं करेगा फिर। सॉरी सर। ठीक है, अभी चलो सॉरी, 10-15 चलो यूज सॉरी, हो रहा मुझे है। तो गुस्सा नहीं करना, चलो ठीक है, बात नहीं। ओके। अब बताओ, अब आंसर बताओ। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं सर, टोटल रिसोर्स ब्लॉक -6। ऐसे ही बोलना है, पर बोलना कैसे ही बोलना है तो, लेकिन रेंज बताओ ना, तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ होगी ना। सर 6 to 100। ओके, जस्ट एक 1 by 1 जा रहा हूँ, देखता हूँ किसका सही होता है। संजय तुम्हारा 6 to 100 है। मेरा सर मेरा निरंजन 6 to 100, चलो। सुमंत, योर आंसर? जिसका आंसर सही हुआ ना, विदाउट गूगल देखे, वो गूगल देखे तो भी गलत है, गूगल में मैं पकड़ लूंगा। जिसका आंसर सही हो उसको 5,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। 0 to 196। 0 to 196। 196 नहीं सर, 96 ओनली। 94 सॉरी। किसका है? संजय। संजय सर, 0 to 94। 0 to 94, ओके। नेक्स्ट, शशांक, हाँ सर। तुम्हारा? 96 सर, 0 से। 0 से 96। सुमंत, योर आंसर? सर 0 to 96 है। 0 to 96। विनीता, तुम कुछ बोले नहीं? 0 to 96। 0 to 96। 96। मोहित? माय आंसर इज 7 to 100। 7 to 100 किसका है? दानेश्वर, 7 to 100, यस सर। ओके। मोहित, योर आंसर? मोहित, योर आंसर? सो करेक्ट आंसर इज 0 to 94। संजय, मैंने क्या बोला था तुम लोग? बता रहा हूँ संजय, तेरा बस मैंने बोला था जो सही बोलेगा उसको 5% डिस्काउंट है, लेकिन वो 1000 रुपीज, जो आंसर अभी गलत बोला ना, सबसे 1000 रुपीज तुम ले लेना। ठीक है सर। 0 to 94 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो ना तुम्हारा मिनिमम बैंडविड्थ क्या है, 1.4 मेगाहर्ट्ज एलटी में, मैक्सिमम 20 मेगाहर्ट्ज। सो 1.4 megahertz having the 6 resource block means 0 to 5. Maximum क्या है? 20 means 0 to 100, 0 to 99. So in one
1.4 in the minimum case, I said every time रैच के लिए कितना चाहिए? 6 रिसोर्स ब्लॉक चाहिए. So in this case frequency offset क्या होगा? In suppose if any E node B is operating at 1.4 megahertz, Niranjan, then can we say frequency offset value will be 3? In this case, can we say frequency offset value 3? निरंजन, हम इस केस में जब 1.4 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है, क्या हम 3 बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफसेट फॉर एनी यूई? नो. व्हाई? नो, बिकॉज इफ एनी यूई सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट 3, yes sir, no sir. then 3 4 5 6 7 8 he need the 6 resource block na. Yes sir. But here to maximum 5 तक ही है. So in this case frequency of value only 1, only 0. But if you have 0, then only 0 1 2 3 4 5, because in 1.4 megahertz you have only 6 resource block. So you have 6 resource block means what? All resource block must be used for RAG. So frequency offset should be 0. So that 0 1 2 3 4 5, all the 6 resources you can take. So minimum is 0. Correct है? Now coming the maximum 20 megahertz bandwidth. So you have to use the 6 resource block na. So 6 Yes, sir. block means start from the maximum means minimum तो 0 हो सकता है. Maximum is 94. If it is can make the 94, then 94 95 96 97 98 99. See this 6 is equal to 3 3. So if 94 we can say, then only by extending 6 we can reach till 99. If you will say suppose 96, so 96 means what? 96 97 98 99 100 101. हमारा तो रेंज है 0 to 99. We don't have 100 and 101 resource block. So how we can say 96 frequency offset? It's not possible. So answer is 0 to 94. Sumant, clear? Anyone having doubt in this question? Sure. Sure. Clear, sir.